Department of Pharmacognosy, B.R. Nata College of Pharmacy, Mysore University. BRNCOP was established in 1995 as the first private institute in the state of Madhya Pradesh. The institute carries all the necessary approvals. Today we are presenting webinar on title Research 2 Rupees through Innovation in Startup Our Ahead by our guest speaker Dr. Neeraj Kumar Sethia. He is currently working as a head department Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship Development, assistant professor, DIT University Dehradun. Previously, he has worked in the position of senior innovation fellow at National Innovation Foundation India, formulation scientist at Rigon Biocorps, Vadodara, teaching assistant at Pharmacy Department, MS University, Baroda. He has total 11 years of experience and he has completed his PhD in 2012 from MS University, Baroda, Gujarat. M.Pharm from the Dr. H.S. Gaur Central University, Sagar, Madhya Pradesh, and B.Pharm from RGPV, Bhopal. He received Young Scientist Award for Best Research Paper and Research Fellowship for pursuing post-graduation and PhD. During his tenure, he achieved research GAT score that is 39.96, H index that is 18, and total citation 1439 with 33 peer-reviewed papers and 7 books. His major area of research include target-oriented and laid-back design and development of new chemical entities from natural scaffolds. Again, anti-stress, anxiolytic, anti-arthritic, antidiabetic, antioxidants, enzymes, anti-malarial, hepatoprotective, and cosmeceutical, etc. Besides teaching pharmacognosy and natural product chemistry, he has also hand-on domains such as innovation, incubation, entrepreneurship development, patents, and national biodiversity authority approvals. I request all the audience, your active participation is very important throughout the session. You can enter your questions and comments in the chat box throughout the presentation. Right now, I request to Dr. Neeraj sir, please hand over to speak. Let's start today. Welcome Neeraj, welcome in B.R. Nata College of Pharmacy. Thanks Dr. Priyanka and thanks Dr. Amit Jain sir, he is my senior. I am thankful to whole team of B.R. Nata College of Pharmacy, Mysore University for inviting me to present with their platform. As we all know, B.R. Nata College of Pharmacy is one of the oldest and very renowned college of pharmacy in Madhya Pradesh. I am also closely associated with the B.R. Nata College of Pharmacy, as during my M.Pharm work, I did part of my animal study in B.R. Nata College of Pharmacy and spent it more than 3 months in B.R. Nata College of Pharmacy. So I am thankful for that. Now, well, good morning to all. I will be talking on the topic Research 2 Rupees through Innovation in Startup A Way Ahead. So, why I have chosen this topic? As this topic is current requirement for our nation, for every institution and for every society. Since in last 5 years, we improved in global innovation ranking and we are now in the position of 52. Before 5 years, we are in the position of 85. So there is one hope by which we can improve our innovation ranking throughout globally, and we can move towards innovation, we can move towards startup, we can convert our research into innovative research, we can convert our research into various startup and finally into entrepreneurship. So there are several organizations in India which are working towards making innovative India, innovative research for making various entrepreneurship development. So these institutions include, one of the institution is National Innovation Foundation, which is also working on grassroots innovation. So since we all are professional, but there are several examples of people who are unprofessional, who have not studied very much, but due to their own innovative idea, they have developed lot of things. They have developed lot of
entrepreneurship skill, lot of business idea, lot of startup. So National Innovation Foundation is working on those grassroots innovator. There are Atal Innovation Mission, who are also working for development of innovation. There are several departments of DST. There are several departments of MHRD are also working towards making innovative India, startup India. So lot of government initiative nowadays taken towards making India innovative. So as per current COVID scenario, there are equal, this scenario provides us equal opportunity for searching out some innovative solution. Being a pharmacy professional, we also have equal opportunity for searching a solution for this pandemic era. So there are a lot of people who are working on sanitization product. Some are working on sanitization tunnel. Some are working on sanitization. Some are working on fabrics, antiviral fabrics. So lot of things are going on simultaneously. There is a race to develop something innovative, something which prevent from COVID-19 to us. There is a race between scientists who will develop first drug for this COVID-19, who will develop first vaccine for COVID-19. So competitive environment is there. So people are doing something. People are doing for treatment. People are doing for prevention. So this COVID-19 situation provides opportunity for many of the professionals to develop something, to provide some solution in various way. So today's my presentation have three different parts. First part is involvement of innovation in startup for conversion of research to rupees. How we can convert our research, our effort to rupees, to monetary benefit. In second point, we will talk how institute will create an environment towards innovation and startup. And in third, we will talk how faculty will involve for the development of innovation culture, for the development of startup culture inside the higher education premises. So first, I need to explain the important definition so that you can familiar with these terms, which is very important for nowadays. Research. As we all know, research is a systematic investigation of study of material and source in order to establish fact and reach out with new conclusion. So most of the time, we are establishing some fact, we are establishing some hypothesis to reach out some conclusion. That research are generally part of various higher education institute. So being a master project, being a PhD project, we are performing various type of research, but we are ended that research after completion of our degree. But we are not thinking beyond that research. How can we proceed further to this research? That outcome of study can give us some monetary benefit, can give us some benefit to the society. So we need to think beyond that after completion of degree. So before designing of any project, we need to think of that. So for designing a proper research project, we need to go for survey. We need to go for market survey. We need to go for field-based survey. We need to go for literature survey. We need to go for patentability of that particular topic. We need, so that we can find out the technological innovative solution. We can find out solution for the society. We can find out some value-added product. So that value-added product is not only innovative product, can change the life of others and can be viable by consumers and can be presented in the market in the form of some product. After that, innovation. So
research is directly connected to the innovation, but innovation is something different from the research. The process of translating an idea or invention into a good or service that create value or for which customer will pay. So the main component here is customer will pay, means we are looking for the business development, we are looking for the customer. It may further define as any new or improved product or process or combination of both that differs significantly from unit previous product or process that has been made available to potential user, brought into use by the unit. Means something what we are doing new, something what we are adding value to the even existing product, or we are inventing something new. So that all things comes together under the category of innovation. I will explain you a very small example of innovation. हम लोग जब पहले सफर करते थे तो बड़ी बड़ी पेटियां, बड़े बड़े बक्से लेके सफर करते थे। बाद में किसी ने उसमें ट्रॉली लगा दी, पहिए लगा दिए, 2 पहिए लगा दिए, और दोनों पहियों को लेके हम उस ट्रॉली को, उस बैग को लेके, कितना भी भारी बैग हो, अब हम आसानी से चले जाते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे, यहाँ वहां एयरपोर्ट में, सब जगह जा सकते हैं। तो पहला इनोवेशन कि उसने पहिए लगा दिए, किसी ने पहिए लगा दिए। उसके बाद नया एक इनोवेशन और आया तो उसमें उसने फोल्डेबल चेयर लगा दी, तो पीछे से वो चेयर फोल्ड होके बैग के साथ लग जाएगी, ट्रॉली के साथ लग जाएगी, जब इच्छा हो तो उस चेयर को खोल लो और आप बैठ जाओ। तो दीज आर द वे बाय विच समवन एडेड वैल्यू टू द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। सो दिस इज इनोवेशन। भुट्टे सेकने के लिए आप लोगों ने, काफी लोग जानते होंगे कि भुट्टे खाते हैं, तो भुट्टे को खाने के लिए, सेकने के लिए उसको बार बार रोटेट करना पड़ता ताकि वो इक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो उस भुट्टे के ऊपर और वो इक्वली चारों तरफ से बेक हो। लेकिन अब ये प्रोसेस क्या थी कि हाथ से थी, फिजिकल प्रोसेस थी। तो अब उसको क्या देखा कि किसी ने क्या किया कि एक मोटर लगा दी, नीचे से हीट जा रही है, ऊपर से मोटर लगा दी, वो एक पर्टिकुलर टाइम में वो मोटर धीरे धीरे घूमती है और भुट्टा चारों तरफ से बेक होता जाता है। सो दीज आर द सिंपल वे बाय व्हिच समथिंग इज क्रिएटेड, समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड। सो दीज आर द इनोवेशन। मींस वी नीड टू थिंक to the out of box, we need to pick up the oddball. So after innovation there is a startup. So it is a young company founded by one or more entrepreneur to develop a unique product or service and bring it to the market. So startup is first, पहली सीढ़ी है इनोवेशन को आगे ले जाने की। छोटी कंपनी, एक टारगेट ओरिएंटेड कंपनी, टारगेट ओरिएंटेड कस्टमर, उसको बनाया कि हम अब इस काम को आगे ले जाके मार्केट में ले जाएंगे, मार्केट में प्रेजेंट करेंगे। दैट इज सिंपल स्टार्टअप। देयर इज नीड ऑफ स्टार्टअप टू इंक्यूबेट। इंक्यूबेशन मींस जिस तरीके से बच्चा मदर के कोख में 9 महीने तक रहता है और मदर उसको इंक्यूबेट करती रहती है और उसका पालन पोषण अंदर चलता रहता है बॉडी के अंदर और बच्चा ग्रोथ होता रहता है। सिमिलर every startup, most of the startups needs incubation. So incubation is a unique and highly flexible combination of business development process, infrastructure and people designed to nurture and grow new and small business by supporting them through early stage of development and change. So incubation is a process जिसमें हम स्टार्टअप को लेके आते हैं, उसको नर्चर करते हैं, उसको हर तरीके का सपोर्ट देते हैं, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, उसको बिजनेस सपोर्ट देते हैं, उसको प्रमोशन का सपोर्ट देते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट देते हैं। तो एक बिजनेस को हम पालन पोषण करते हैं, अच्छी तरीके से उसको बनाते हैं, उसको हर तरीके से मार्केट में लॉन्च करने लायक बनाते हैं। So that is incubation. So there are several incubator nowadays in country are working for such types of support. So after startup, there is entrepreneurship, which is referred to the process of development of any enterprises bearing any of its risk with the view of making the profit. So when entrepreneurship comes into existence, means some enterprises come into existence, means
कि आपका बिजनेस अब खड़ा हो चुका है, अब आपको आगे अपना काम करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट recently created innovation cell which is collaboratively work with All India Council of Technical Education as well as MHRD. The main objective of this innovation cell to provide support to higher education to establish their institutional innovation council. So they are inviting application from every higher education throughout the India to development of institutional innovation council. So the prime objective of this institutional innovation council throughout the India is to foster the culture of innovation amongst all higher education institutions in India, to encourage, inspire and nurture young students by supporting them to work with new ideas and transform them into prototypes while they are in formative year. So the main thing for innovation is a new idea. So this institutional innovation council provides an opportunity to the student to think on new idea, to think on some problem solving attitude, to think out on some odd walls, some different things, so that they can innovate, they can create a culture of innovation inside the institution. So this kind of support is provided by Institutional Innovation Council, which every higher education nowadays need to develop inside the premises, and they have to work closely association with MHRD. MHRD approved your Institutional Innovation Council after you apply your Institutional Innovation Council to the MHRD, so they can approve and they can closely monitor your Institutional Innovation Council for the development of innovation inside your institute, for the development of startup inside your institute. So the main objective is to promote innovation inside the institution by various way, so that innovation ecosystem can exist inside the campus. What are the various functions of the development of any institutional innovation council inside the campus? It to conduct various innovation and entrepreneurship related activities prescribed by Central MHRD Institution Council in time-bound fashion. So there are annual calendar of MHRD Institutional Council. They will provide annual calendar for various activities. You need to perform these activities in July. You need to perform these activities in August, September, October. So they are providing every framework. So you need to follow their framework so that your institution can develop a good innovative product, good innovative student, good innovative culture, good innovation culture, good startup culture. So you need to follow everything as per Institutional Council of Ministry of Human Resource and Development. So the prime function is identify and reward innovation. So if something is innovative inside your institute, you need to identify them, you need to reward them, you need to organize periodic workshops, seminar, interaction, entrepreneurs, investor, professional, and create mentor pool for student. Nowadays पहले गाइड बहुत लोग बोलते थे कि ये हमारा गाइड है, ये हमारा गाइड है। इनोवेशन की भाषा में हम बोलते हैं कि ये हमारा मेंटर है। तो अगर कोई स्टूडेंट को मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए, किसी स्टूडेंट को किसी तरीके की गाइडेंस की जरूरत है, तो यू नीड टू इन्वॉल्व एज ए मेंटर, यू नीड टू क्रिएट अ system from which some faculties are also mentoring to your student for the mentorship support. So after that there is a prime importance of network, means collaborative work. जैसे हम रिसर्च में collaborative work करते, कुछ पार्ट यहाँ कर लेते थे, कुछ पार्ट वहाँ कर लेते थे, कुछ पार्ट कहीं और कर लेते थे. So similar in the case of innovation, we need to provide networking support. Institutional innovation portal is also there. I see MHRD provide you a portal where you can submit your highly innovative project from your institution to Institutional Council of MHRD.
You can organize hackathon, you can organize idea competition, you can organize mini challenge with the involvement of industry for the promotion of innovation and startup activity inside your premises. What kind of support that provided by IIC network? If you are the part of IIC network, what kind of support you will get? There is no any major capital investment required for the development of Institutional Innovation Council by any of college, any of institution, or any of university. Students and faculty associated with your Institutional Innovation Council have exclusive opportunity to participate in various innovation related initiative and competition organized by MHRD. Means you will directly link from your college to MHRD competition, MHRD initiative. You can directly link your student with the MHRD initiative. There are several prizes, there are several certificates every month that student can gain. There are meeting with several renowned business leader, there are meeting with several renowned academician, so a student can get mentorship support from those renowned business leader, renowned academician. They can learn from their story, they can learn from their experience, so that meeting is always fruitful. There are opportunity to nurture and prototype your new idea. So prototype is a term which are generally used for presentation of your idea in innovation. So you can develop a prototype. सपोज आपने सोचा कि इस फैन की डिजाइन बदलनी है जिससे ज्यादा हवा आएगी, तो उसका आपको प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा कि आपको पंखे की साइज किस तरीके से रखनी है, उसका मेजरमेंट क्या रहेगा, उसको बना के एक वर्किंग मॉडल में आपको दिखाना, दैट इज प्रोटोटाइप. सो there is an opportunity to develop your prototype. Some prototypes are very complicated. There are various electronic prototypes and various types of mechanical engineering prototypes. Several types of requirement is there. So that prototype can be developed through collaboration with various institutions, various academics and various industries. So you can also get mentoring support from industry professional. You can also experiment some new technology with the support of them. You can also visit some new place, new culture you can think. So visiting new place and new culture is always beneficial for everyone. So this is all about innovation startup cycle, which is involved in various national level competition. So when you are innovator, you need to face such types of challenge in various competition. So being a student of any college, being a faculty of any college, you need to involve your student to field visit. You need to involve your student to market survey. आपको उनको भेज देना चाहिए कि भाई जाओ मार्केट में घूम के आओ, जाओ उस गांव में घूम के आओ और वहां कितनी समस्याएं हैं उनको नोट करके लाओ और उस समस्या का समाधान कितने लोगों ने किया है, किन किन समस्याओं को कितने लोगों ने समाधान किया है. एक प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता है, अगर आप लोगों ने किसी ने नाम सुना हो, पद्मश्री हैं. ही इज ए प्रोफेसर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद. तो वो IIM के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो शोध यात्रा में ले जाते हैं. द वर्ड इज नोन एज शोध यात्रा. मींस यू आर सर्चिंग समथिंग फ्रॉम फील्ड्स, यू आर सर्चिंग फ्रॉम आउटसाइड समथिंग. तो वो 2-2, 3-3 महीने के लिए किसी जंगल में, किसी गांव में ले जाते हैं बच्चों को और उनको वहां पे छोड़ देते हैं. बोलते हैं कि यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यू सर्च द सॉल्यूशन. तो वहां पे वो लोग पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट को लेके आते हैं और फिर बाद में क्लास में डिस्कशन होता है, उसका एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, उसके ये पॉसिबल सॉल्यूशन है. सो फ्रॉम फील्ड विजिट you can identify the problem. After identification of problem, there is ideation or workshop. So you can present your solution for those problem. Means it is college level competition. After that, you can develop proof of concept. Means something scientific way. कि आपने जो प्रॉब्लम है, जो उसका सॉल्यूशन ढूंढा, उसको आपने साइंटिफिकली कैसे प्रेजेंट किया. देन आप
बेस्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करते हो, देन उसके बाद उसका आइडेंटिफाई पेटेंटेबल कंपोनेंट, मींस whether that thing is patentable, whether that thing is inventive, whether that thing is new. So you can identify the patentable component. If you are utilizing biological resource for your innovation, then you also need to go for National Biodiversity Authority approval. So whenever you are using biological component, your patent not granted till you will get approval from National Biodiversity Authority. So that is also one component which conserves the biodiversity of India. So you need to go for the process of National Biodiversity Authority when you are working with some natural product, when you are working with some plant, when you are working with some microorganism, anything which is from biological origin, you need to get permission. So identification of IP component will protect you, protect your innovation, means protect your invention for anything other. Then after identification of patent, you will go for prototype development, means आपने प्रॉब्लम ढूंढी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, सॉल्यूशन को साइंटिफिकली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया, उसको पेटेंट भी करा लिया, पेटेंट के लिए आपने डाल दिया, अब उसके बाद आप उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, आप उसकी डिजाइन बनाएंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आप ऐसा दिखेगा. इट मे बी सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट, इट मे बी ऐप बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये सब सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है. किसी को घर किराए से देना है, किसी का घर किराए से लेना है, किसी का पुराना सामान बेचना है, किसी का नया सामान बेचना है, कुछ मेडिकल की दवाइयों की डिलीवरी घर पे करानी है. दीज आर ऐप बेस्ड सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट. तो आप उसके भी ऐप डिजाइन कर सकते हो. और कुछ टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, सपोज कोई मशीनरी बनाई, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, जैसे एक अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्मार्टफोन के साथ एक मशीन बनाई, उसको डॉक्टर अंजलि मासेलकर अवार्ड भी मिला उस इनोवेशन को. दैट अवार्ड इन द नेम ऑफ मदर ऑफ प्रोफेसर आर.ए. मासेलकर, हु इज द एक्स डीजी ऑफ CSIR lab. So he is the very renowned person of this our India. So ECG portable ECG machine बनाई, portable breast cancer detecting machine बनाई. तो these are the medical innovation which are nowadays very booming. So हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए. आज हम लोग अपने किसी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं, हम किसी इंस्ट्रूमेंट का पोर्टेबल वर्जन बना सकते हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को कुछ इजियर वे में बना सकते हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड, जैसे सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्शन है, मैं हर्बल का हूं तो मुझे सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्शन सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगती, 3 दिन 4 दिन जबरदस्ती लगे हुए हैं एक्सट्रैक्शन का. तो उसको बदल के अपन को कुछ सस्ते ऐसे डिवाइस बनाने चाहिए कि हम उसको कम समय पे, कम लागत पे बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट को बना सके. तो देयर आर सेवरल थिंग्स, सेवरल टेक्नोलॉजी which we can advance, which we can add value on those technology, so that technology can be in the form of prototype, can be developed. That prototype is selected in college level and that prototype can be nominated through IIC portal. अगर आपका इंस्टीट्यूट in Institutional Innovation Council approved है MHRD से, so you have one IIC portal, you can nominate your selected prototype to from IIC portal and that can go for regional mentoring session. वहां पे और भी बड़े लोग आएंगे और आपको आपके प्रोटोटाइप पे सलाह देंगे, सुझाव देंगे. They can improve your prototype through mentoring, they can improve your prototype from various technology. Then that can again go for national level boot camp and exhibition. Boot camp क्या होता है? You need to present your prototype, you need to present your innovation, you need to in the form of pitch deck. Pitch deck is simple presentation of your prototype, presentation of your idea, presentation of your solution. तो नेशनल लेवल पे आप प्रेजेंट करोगे. नेशनल लेवल पे आपका अगर प्रोटोटाइप कहीं पे सिलेक्ट होता है, कुछ लोगों के द्वारा देखा जाता है, कुछ इन्वेस्टर के द्वारा भी अगर उसको कुछ रिवार्ड मिलता है, तो आपको लगता है कि हमारा प्रोटोटाइप आगे बिजनेस में जाने लायक है, स्टार्टअप बनाया जा सकता है, तो यू कैन गो फॉर इंक्यूबेशन सपोर्ट. देयर आर सेवरल इंक्यूबेटर इन नेशन. You can approach your nearby incubator
for incubation support, for development of business model, for development of promotional model, for development of investor model, for development of, so there are several things which comes under incubation support. So you can get incubation support from them, and then the whole system will be startup ecosystem is generated inside the India. So this is the way by which you can interlink your innovation to the startup. So there are various focused area. Hello? So there are various focused area. So these focused areas include healthcare and biomedical device, agriculture and rural development, smart vehicle. So being a pharmacy professional, we need to go for healthcare and biomedical device. So we can develop various healthcare product, we can develop various immuno boosting product, nutritional product, we can repurpose various drug, we can also fabricate some new biomedical devices with the help of other engineering stream. So there are various ways. We can also go for waste management. We can also go for clean and potable water. We can also go for biodegradable type of polymer, which we can convert into various polythene. We can change the polythene scenario of nation. So there are several ways by which we can support our nation through our innovation. So these are the several schemes of Government of India which are provided to various institutions, so that institution can foster the innovation culture, foster the incubation culture, foster the startup culture. So these are the scheme. First is Institutional Innovation Council, which is supported by MHRD. Then is medium scale medium enterprises, that is supported by Government of India. Then Atal Community Innovation Center, then Startup Council of every state also provided support. Then Entrepreneurship Awareness Camp by Entrepreneurship Development Institute of India, Gandhinagar, Gujarat. Then there is a scheme of Tara DST, Technological Advancement of Rural Area. Then TBI DST, then Aspire, then Seed Support System. So there are several schemes of Government of India which are supported to various institutions, various incubation center for promotion of startup and innovation activity. So being a faculty, most of them are faculty, and being a faculty, what is our role? How can we provide, how can we improve our ecosystem, innovation ecosystem of our college? So what we can bring the change? So the future we will shape together. We all are faculty. हम लोगों को सोचना चाहिए अपने बच्चों के बारे में. हम उनको सिर्फ जॉब दिलाने लायक क्यों बनाते हैं? Why we are creating job seeker only? We need to create some job creator who will give job to other. So we need to think on that. We need to identify some student from our class, that those who can become entrepreneur of our nation. So we need to think on that. So the main possibility of faculty who can play the role, we are what our teacher made us. हम लोग वैसे ही हैं जैसा हमको टीचर ने बनाया है, but we can make our future by our action. So this is our action, that we need to do something for our student. We have the option of remaining a bystander, be an active participant, the making of our future. Our student will remember us for what change we brought to their thoughts, their idea, and their lives. So student will always remember. We also remembering our teacher. So this is the scenario of student, that they will always remember if some teacher provides them something new, something creative, something mentorship, something change in their lives. So student will always remember. So what a faculty can do? How can faculty change their minds of student? So faculty have information, faculty have case discussion, faculty can promote student for various virtual tour. There are online interaction with an entrepreneur. आप किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ में आप आपके स्टूडेंट का इंटरेक्शन कराओ. There are several excellent websites of various entrepreneurs. You can show them those websites.
There are several resources for entrepreneur. You can show them. You can tell a story of various successful entrepreneur. There are various documentary films, experience, which can be shared with the students so that they can change their mind. Why should we share our opinion? इससे क्या फायदा होगा अगर हम लोग अपने ओपिनियन अदर देन टीचिंग के अलावा हम लोग ये करते तो क्या फायदा होगा? Sharing an option may bring a new perspective. The student may also be waiting. कई स्टूडेंट इस चीज को चाहते हैं कि उनके साथ कुछ डिफरेंट हो, वो रूटीन लाइफ ना चले कि बस आए क्लास में पढ़ा, टीचर आया, उसने फार्माकोग्नोसी पढ़ा के चला गया, उसने इंट्रोडक्शन बता दिया, उसने स्टैंडर्डाइजेशन बता दिया, वही डेली लाइफ, डेली रूटीन, समथिंग डू डिफरेंट विद द स्टूडेंट. You definitely get some student from your class, those have entrepreneurship or startup skill. So try to identify those students. Don't go for toppers. हरदम टॉपर के पीछे मत भागो, टॉपर बस से कुछ नहीं होगा. Every students are equal, so you need to identify every group of student. So being a faculty, this is your responsibility to identify those groups. The student also hesitate. स्टूडेंट अपने दिल की बात कभी आपसे कह ही नहीं पाता. कई बार उसको डर लगता है कि ये फैकल्टी तो ऐसी है, मेरे साथ क्या करेगी, मैं क्या बोलूंगा. मैं अपने यहाँ का एक वाकया बताता हूँ. अभी तक मैं स्टार्टअप सेल में हूँ, लेकिन मेरे यहाँ से किसी भी स्टूडेंट ने आज तक कभी भी ये अप्रोच नहीं किया कि मुझे ये करना है. लेकिन एक दिन मुझे एक फोन आया कि सर मैं एक मेडिकल ऑनलाइन बिजनेस खोलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं उस ऑनलाइन बिजनेस में जितने भी जेनेरिक ड्रग हैं उनको प्रमोट करूं और उस जेनेरिक ड्रग को मैं गांव-गांव तक सस्ते दामों में पहुंचाऊं. मुझे उसकी अप्रोच अच्छी लगी. तो इस तरीके से बच्चे चाहते हैं, वो सोचते हैं इस बारे में, तो यू नीड टू सपोर्ट देम. द स्टूडेंट मे आल्सो प्लान समथिंग which may turn out to very different thing. आपको लगता है कि वो चीज छोटी होगी, लेकिन वो कई बार वो चीज छोटी नहीं होती और कई छोटी चीज बहुत बड़ी बन जाती है. The student may overcome from frustration. स्टूडेंट का फ्रस्ट्रेशन भी खत्म होगा. उनको जो आपसे बोलने में, जो अपनी चीजें करने में जो डर लगता है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो भी खत्म हो जाएगा. आप ऐसी चीजें बताएं जैसे किस बंदे ने 2 लाख बेगर्स को एंटरप्रेन्योरशिप बनाया. आप इस तरीके की चीजें पढ़ें, इस तरीके की चीजें समझें. 20 लाख लेडी को एंटरप्रेन्योर बनाया. ऐसे कई लोग हैं. मोहम्मद यूनिस ने ग्रामीण बैंक बनाया जिसके लिए उनको अवार्ड मिला. 200 ब्लाइंड पीपल को हाईली स्किल्ड पर्सन बनाया. आजादी के पहले भी निर्मल ग्राम टाइप के विलेज बनाए. तो इस तरीके की देयर आर सेवरल स्टोरी सोशल एंटरप्राइजेस के ऊपर हैं. ये सारी स्टोरी आपको स्टूडेंट को बतानी चाहिए. आपको उनको संघर्ष बताना चाहिए कि उनने इतना सब करने के लिए क्या किया. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, उसको बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई. कंज्यूमर एक्ट आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, क्या कोशिशें की गई. इस तरीके से सारी स्टोरी उनको बतानी चाहिए. इस तरीके की मूवी उनको दिखानी चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप पे बेस्ड हो. मांझी, सोशल नेटवर्क, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली, बिकमिंग वेरन बफेट, पैडमैन. अभी रिसेंटली रिलीज हुई है मूवी ये पैडमैन. तो उसमें किस तरीके का संघर्ष दिखाया है, कैसे उसने लोगों की लाइफ चेंज की है, कैसे उसने अपने आप में संघर्ष, किस तरीके की मूवी दिखानी चाहिए. सो दीज आर द पिक्चर क्लिप ऑफ सम मूवीज. तो अगर आप लोगों ने ये पिक्चर क्लिप देखी हो, ये छोटी बच्ची अमिताभ बच्चन के साथ है, इसका नाम छाया है. ये क्लास 6th की स्टूडेंट है किसी सरकारी कॉलेज की. और इसने क्या इनोवेशन किया, इसने इनोवेशन ये किया कि स्कूल के अंदर बच्चे अलग अलग हाइट के होते हैं, तो वॉश बेसिन का जहां से वो पानी पीते हैं वो फिक्स क्यों रहता है, वो उसको भी हाइट के साथ बनाना चाहिए. छोटे बच्चे के लिए छोटी हाइट पे वॉश बेसिन होना चाहिए, बड़े बच्चे के लिए बड़ी हाइट पे, उससे बड़े बच्चे के लिए बड़ी हाइट पे. तो स्टेप टाइप का उसने वॉश बेसिन डिजाइन बनाया जो ज्यादातर स्कूलों में आजकल प्रमोट किया जाता है. तो इस बच्ची का ये सिंपल इनोवेशन था. फिर ये 3 इडियट्स मूवी का सीन है. ये मोहम्मद सजाउद्दौला है जो साइकिल से नदी पार करते थे. दिस इज फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन. सो आवर कंट्री every year organizes festival of innovation
जहां से देश भर के सारे इनोवेशन आते हैं, वहां पे हर तरीके के लोग आते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में ये प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। दिस इज द प्रेसिडेंट हाउस सीन। वहाँ पे हर तरीके के ब्यूरोक्रेट्स, एकेडमिशियन, सब तरीके के लोग आते हैं। इफ यू गेट चांस टू प्रेजेंट योर इनोवेशन इन दैट कैंपस, you will definitely get success. So thanks everyone. I look forward to receiving your opinions, idea, feedback at my mail ID. You can also get my Facebook, LinkedIn, Twitter page. Thank you. Thank you so much, sir, for such a nice, informative session. You briefly discussed about the research, innovation, incubation, and entrepreneurship development at academic institutional level. I think the webinar will definitely enrich the student and faculty to develop the entrepreneurship skills at the institutional level. I want to convey my thanks from BRN COP family, Mansoor University, for giving your valuable time to guide us. And I am also thankful to all participants, students, faculty from academic institutions, industrial persons, research scholars for attending this webinar and to listen very patiently. Thank you so much, sir. ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था। रियली And you explain in इतनी very सारी चीजों को एक प्रेजेंटेशन में इतनी सारी चीजों को एक साथ लेना बड़ा टफ था। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट किया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं डॉक्टर प्रियंका से बोलूंगा कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो एक एक करके So first, I would like to ask about how can teaching entrepreneurship and innovation be developed at universities? So, for development of entrepreneurship and innovation ecosystem inside the university or campus or education institute need to develop some innovation cell where people can approach, where people can have some problem solving way. Some person is allocated so that that person can also visit various workshops, various hackathon, various program, various innovative competition, so he can learn regularly from there. No one can learn entrepreneurship or skill from childhood, so everyone need to learn the things. So being a pharmacy professional, I am also pharmacy professional. I am assistant professor in pharmacology here. So I've learned from my experience that I have visited many places, many जुगाड़ मैंने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे इनोवेशन देखे हैं, बहुत सारे इनोवेशन की कंपटीशन में जज रहा हूं। तो कई जगह मैंने सारी चीजों को देखा है, समझा है, जाना है, परखा है। वैसे ही आप अपने टीचर्स को, आप अपनी फैकल्टी को भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो सो दैट ही कैन विजिट टू वेरियस प्लेसेस and he can share their experience to your institute, to your university, so that environment can be created. Yes, sir. One more question from audience side. What are the main components of entrepreneurship? Main component of entrepreneurship are being a pharmacy professional. I would like to go with profession. So for pharmacy professional, main component of entrepreneurship, you need to develop some technological idea. You need to convert that idea into prototype. You need to present your prototype in front of customer, who you need to understand the target buyers of your prototype. You need to improve your prototype into the product. You need to nurture your product present in the market through various business innovative idea. Then these are the way by which you can become successful entrepreneur. One more question. What are the types of entrepreneurships? So types of entrepreneurship, that I don't have that much of idea, because we are generally focusing on innovation and startups. So there are several types of entrepreneurship, so that one MBA person can ज्यादा अच्छे से बता पाएगा, मैं उसको अच्छे से बता नहीं पाऊंगा। What are the role of education in the promotion of local universities and entrepreneurship? Role of education in promotion of local industry and entrepreneurship.
being a education institute, you need to visit your local place. You need to search everything. You need to visit various village. You can find out many people are solving many problems by their own mind, their own creativity. So you need to also help your student, support your student to visit with them. There are कई तरीके के वैद आपने देखे होंगे, कई तरीके के लोग देखे होंगे, कई तरीके के मिस्त्री देखे होंगे जो अलग अलग तरीके की बाइक बना के घुमाते हैं, अलग अलग तरीके की मशीन बना के घुमाते हैं। कई किसान ऐसे देखे होंगे जो अलग अलग तरीके की खेती करते हैं, अलग अलग तरीके की गेहूं की वैरायटी उगाते हैं। सीहोर के जाने कितने किसान राष्ट्रपति भवन में अवार्डेड हैं, कई तरीके की दाल की वैरायटी बनाई हुई है। तो उनने कैसे किया? इस तरीके के अगर लोगों से आप अपने स्टूडेंट को इंटरेक्ट कराएंगे तो आप अपने स्टूडेंट के अंदर दिमाग में ये बात पैदा कर सकते हैं कि यदि ये अनपढ़ इंसान कुछ कर चुका है और इतनी बड़ी मुकाम पे पहुंच चुका है तो आपका स्टूडेंट तो एक पढ़ा लिखा B.Pharm ग्रेजुएट बनने वाला है, वो क्या करेगा? ये उनके दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी और एक लोकल इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, सो बाय विच यू कैन गेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट। थैंक यू सो मच सर, यू क्लियर ऑल द पॉइंट। मेरा भी क्वेश्चन क्लियरली, एक मेरा भी क्वेश्चन था। यस सर, यस सर। कॉलेज में ऐसा क्या डिस्प्ले करें कि बच्चों के मन में एक स्टार्टअप के लिए एक जुनून आए कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि हर बच्चे में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो रहता है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम उनको कैसे सपोर्ट करें? कहीं हम फ्लेक्स वगैरह लगाएं, क्या करें कि उनके मन में भी लगाए कि हाँ हम भी इस फ्लेक्स में आ सकते हैं? हमको क्या करना चाहिए सर? हमको हमारे प्रोफेशन की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम सपोज हर्बल ड्रग रिसर्च में कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, हम ड्रग डिलीवरी में कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, हम एनालिसिस में कुछ इनोवेटिव, इंस्ट्रूमेंटेशन में अलग अलग पार्ट की प्रॉब्लम को टीचर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये सबसे बड़ा गैप है। अगर इस गैप को फिल कर दिया जाए तो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, एक नया इनोवेशन बन जाएगा। तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके आप बोर्ड में लगा दो क्लास कॉलेज के चारों तरफ कि ये फार्माकोग्नोसी रिलेटेड है, ये हर्बल रिलेटेड है, ये फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड है, ये एनालिसिस, ये इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड है। अब जो बच्चा इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उन बच्चों को आप टारगेट दे दो कि भाई ये आपका प्रोजेक्ट है, आप इसके लिए सॉल्यूशन लेके आओ। ये 10 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम के जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन लाएगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा। तो बच्चे उसका सॉल्यूशन ढूंढ के लाएंगे। बच्चों को खोज करने दो, बच्चों को घूमने दो, फिरने दो। बच्चे सिर्फ लैब और कॉलेज क्लास के अंदर बस रिसर्च नहीं कर सकते, उनको घूमने दो, उनको आजादी दो, तो बच्चे कुछ काम कर सकते हैं। इस तरीके का एक वीक मनाओ कि भाई ये इनोवेटिव वीक है और इससे बच्चे कुछ सीखें, बाहर घूमें, समझें और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उसका सॉल्यूशन लेके आए। तो डेफिनेटली अगर कोई बच्चा रिवार्डेड होगा तो वो उस बारे में सोचेगा जरूर। Thank you Neeraj for such a nice information. Thank you sir. Thank you sir. College. Thank you sir. Thank you for inviting me. Thank you.